और बताइए जी। ये एग्जिबिट P11 है माननीय न्यायालय जी, उससे क्या हो गया? इसमें जो जब्त किए हैं इनको मृतिका के जो भी ऑर्गन्स थे और जो भी आर्टिकल्स थे उसको एफएसएल के लिए भेजा गया। लेकिन ये जो जब्त किए हैं मेमोरेंडम के आधार पे, एक पुराना बांस का डंडा जिसमें 4 गठाने हैं, मोटाई तरफ हल्का फटा हुआ है एवं बीच में एक फटा सा, लंबाई करीबन 4 इंच एवं मोटाई 4.5 इंच करीब है। इसको ना तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से जांच कराई कि ये डंडा उसी ने पकड़ा था कभी, ये इस संबंध में कोई जांच नहीं। साथ ही उसमें जो पॉलीथीन पकड़ी गई है उसकी सेल्फ हॉस की, उसमें भी उसकी भी जांच फिंगरप्रिंट से नहीं कराई गई कि क्या किसी व्यक्ति ने कभी इस पॉलीथीन को पकड़ा था। ये गंभीर संदेहास्पद परिस्थिति उत्पन्न करता है। सबसे बड़ी बात कि एग्जिबिट P1 और एग्जिबिट P28 माननीय न्यायालय जी जी देखेंगे थोड़ा। हाँ बताइए ना। इसमें दोनों नक्शों में गंभीर विरोधाभास है। P28 तो शायद पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें नक्शा कब से नहीं बना? माननीय न्यायालय, ये ये नजरी नक्शा है, घटना स्थल का नक्शा रेखा चित्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी 28 सफर ना, ये P28। क्या विरोधाभास है इसमें? सर इसमें ये है कि इसमें जो इनके बालक ने बताया कि खिड़की और दरवाजे के संबंध में कि जो छज्जा में चढ़ करके उसने देखा पापा ऐसा कर रहे थे, तो वो खिड़की और दरवाजे इसमें कहीं दर्शित नहीं है, दोनों नजरी नक्शे में। ओके। जहां से बालक देखने की बात कर रहा है कि मैंने छज्जे में चढ़ करके ऐसा देखा है, वो कहीं भी इसमें दर्शित नहीं। अभी भी डिसाइड कर दें नारेट पर। दरवाजा बंद है, बच्चा अंदर से देख रहा है, अगर वो कह रहा है खिड़की से तो खिड़की होना चाहिए, दरवाजा होना चाहिए। छज्जे पे चढ़ के देखा, उसने ये कहा कि मैंने छज्जे पे चढ़ के आवाज लगाई खोलने की। डिफरेंस बिटवीन टू। तो ये आप चल रहा है, वो कहता है कि खिड़की से हम सच्चे पता है, हम चिल्ला रहे। माननीय न्यायालय, इसमें ये अभियोजन साक्षी 2 नंबर, मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी राजू चौहान को जानता हूं, वह मेरा साड़ू भाई है। मैं मृतका ललिता बाई को भी जानता हूं, वह मेरी साली है। इन्होंने ही उसमें मेमोरेंडम में साइन किए हैं। भाई वो तो आप बता चुके, डोंट रिपीट योर आर्गुमेंट। जी 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 जी। You have already said this thing, and when we asked you categorically to point out that how it will affect the credibility of the memorandum, you could not tell us anything. जी जी माननीय न्यायालय, ये अभियोजन साक्षी नंबर 1 बालक है उसका। मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी राजू चौहान को जानता हूँ। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मेरा पिता है। मृतका ललिताबाई मेरी माँ थी। मैं इंदिरा मेमोरियल। बताना क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि मैंने छज्जे में चढ़ करके खिड़की से देखा पापा को ऐसा करते, जबकि नजरी नक्शा, दोनों नजरी नक्शा में, पटवारी के और पुलिस के दोनों नजरी नक्शा में कहीं भी ना तो छज्जा है और ना ही दरवाजा है, ना ही खिड़की। मैं ये कहना चाहता माननीय लोग चिल्लाने लगे तो पापा ने उसने पहले मार दिए, बंद कर दिया।
P1 और P20 सर सभी क्या है ये बाथरूम है सर, हाँ? नहीं नहीं बाथरूम ये में किचन है सर, उसमें 28 मिनट तक में होगा। सी ये अगर यहाँ पड़ी हुई है ये किचन में इनको बनती है सी मतिका का निवास स्थान है, बी ये नंबर। तो B है। हाँ, तो वो बता ही नहीं, बंद कर दिया है इनको। तो स्थानीय नहीं दिखता है दोनों नक्शा में, उससे कैसे फर्क पड़ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन इसने प्रॉपर नहीं किया कि कहाँ से। हाँ हाँ ये सब वही है सर, इनकी पढ़ाई लिखाई आप देखिए। हम्म, भी अगर वैसे नहीं देखता बता रहा, ये बात तो नहीं सुनी। एक सर नहीं शुरू में मेडिकल के लिए ले जा रहा बच्चा शॉप में आ जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले कभी देखा, हमने देखने में बताया हो तो उन्होंने स्टोरी डेवलप की है तो बस हमने, बट इशू ये है कि बात हम 2 मिनट के लिए अलग भी कर रहे हैं। प्रेसिडेंट अभी तक जी also right. लेकिन हमारा अभी तक हो जहाँ तक कि एविडेंस को अनरिवर्टेड 19 सर्विस यहाँ से आगे चूंकि करने रेप्चर था और बड़ा घाव था, बड़ा घाव था। ऐसा कर दिया कि राइट भाग के ऊपर के एंटियर टूटा हुआ था, पेट के से पर्दा आती है कि झिल्ली पेल थी, मुंह की तगड़ा सर के समूह थी, एब्डोमेन कैविटी है तो इसे कैरेटिन की भाव से पेट का तभी कर कुछ खाली थी कि कम रही था, पीता पीता एरिया कैप्चर था, शहर से थोड़ा आ जाएगा देखो कैप्चर ना। वो पहले ही मार गई थी सच मुझे लगती कि नहीं मारी है उसको, ये बताने से कि दिस टाइम वाज वेरी शुड कन्वर्ट इट इनटू अ केस ऑफ सुसाइड इसमें जस्ट पोलियो वाली बेहोश आदमी की राइट एटी वेक्टोरियल में बड़ा घाव था, दाहिना चैम्बर फूटा हुआ था, तीली में बड़ा घाव। मेरी बात स्पीड भी फुली हुई थी। बाकी मुझे तो अगर हम एक्सक्लूड भी कर दें जहर वाला हाँ पक्ष, सभी स्प्लीन फूटी हुई थी, हार्ट स्ट्रक्चर स्प्लीन फटे थे, हार्ट फ्रैक्चर था, उसका क्या स्पष्टीकरण है? दत्त के उपरांत संचार बंद होने से हम सुबह
हार्ट की रप्चर है, स्प्लीन रप्चर है। तो अगर इसको एक्सक्लूड भी कर देते हैं PW19 तो कह रहे हैं उनका हार्ट भी रप्चर था, स्प्लीन भी रप्चर थी, स्वयं जहर पीने से दोनों कैसे हो जाएंगे रप्चर? जी कोई होगा ना आपके पास में मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में, पॉइजन कैन कॉज हाँ, ब्लड डिसइंटीग्रेशन ऑफ स्प्लीन एंड हार्ट। हार्ट को बस्ट कर सकता है सर। हाँ बताइए। ये मैं लाया तो नहीं, लेकिन ये लाया है नहीं तो- अधिकांश जितने भी पॉइजन के केस हैं सबसे पहले हार्ट ही बस्ट होता है। कहाँ लिखा है भाई वकील साहब, थोड़ा बताइए ना हमको। जी मैं फ्रैक्चर हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, घाव हो जाएगा, घाव नहीं होगा, वो फट घाव है जाएगा। इसमें तो। उसमें घाव हुआ है इसमें, जी आगे स्प्लीन भी इसमें फट गई है। जी जी आगे इसमें ये भी मानने वाला है कि इसमें जो धारा 300 आईपीसी का तत्व मैन है, मोटिव ऑफ मर्डर और इंटेंशन ऑफ मर्डर, दोनों गायब है। ठीक, और बताइए। बाकी इसमें अराउंड 10 ईयर हो चुका है और तो आप विकलांग बता चुके हैं, आप रिपीट मत करिए। जी लिखिएगा। सर राजेश मैं अवस्थी, पैरा 7 देख रहे हैं, पैरा 23 का, PW23 का। Rajesh Avasti, learned counsel for the appeal. This appeal is filed. Yeah, for this counsel. Exhibit 22 सर। डीवी से क्लिक करें। मिश्रा Number, no number. Being accused of the judgment 19/11/2015 passed by learned first additional session judge Parasikti district Balaghat in sessions case number 61 of 2015. Full stop. Next. Perused IA 6922/2024 an application for taking document on record. IA is allowed, document is taken on record. The said document is a disability certificate issued by the office of the civil surgeon, some hospital superintendent Balaghat, showing 80% disability on account of amputation of the right arm. Full stop. It submitted that the whole prosecution story is improbable. Prosecution case is that disease Sushila ही नाम है ना, Lalita, disease Lalita was the wife of the present appellant Raju alias Rajesh, son of Bhaiya Lal Chauhan. She died. Full stop. It is submitted that she had in fact consumed the poison, as can be seen from Exhibit P29, in which it is mentioned that she died because of consumption of a poisonous substance. Same is the narration in Exhibit P26. Full stop. It is submitted that present appellant had performed last rites and therefore he never ran away from the scene of crime. Had he been the accused, he would not have remained at the place of the crime. Full stop. It is further submitted that first appellant was taken in custody and then his statements under Section 27 Evidence Act were recorded. It is further submitted that witnesses to the memorandum under Section 27 are interested witnesses as they happen to be relatives of the deceased. Full stop. Reliance is placed on the judgment of Supreme Court in the state of UP versus Devman Upadhyay 1961 bracket में bracket close 1 SCR 14. Full stop. It is also submitted that in the spot map, no window oblique chhajja has been shown from where the child witnesses claim to have seen the incident.
and therefore it is submitted that it is the case where deceased Lalita consumed poison on her own, and now the appellant has been convicted under section 302 IPC. Next pair. Shri Arvind Singh, learned public prosecutor, submits that PW19 is the doctor. He found several injuries on the body of the deceased. He found spleen to be burst, so also the heart to be ruptured. Full stop. These injuries could not have been caused due to poisoning. Full stop. Allegations made by PW1 that their father had killed their mother has remained almost stable, almost unrebutted. Full stop. Next pair. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, evidence of PW19 shows that, demonstrates that deceased Lalita was dead, was almost dead because of the injuries caused to her vital organs like heart and spleen. Full stop. There are several injury marks on her body. Full stop. Conduct of the appellant is also doubtful. He, instead of taking his wife to the hospital, locked the house from inside. When boys cried for help, then police came and got the shutter opened. Next. As far as judgment in Shivdev Upadhyay is concerned, Devman Upadhyay is concerned, that has been not directly cited, but it has been referred by Shri Avasthi through citing a judgment in case of Perumal Raja alias Perumal versus state, represented by State Inspector of Police in SLP criminal number 863/2019, decided on पूरा जजमेंट भी नहीं लाया। क्या बात हो पाती है अवस्थी जी, क्या हो गया? ये पक्षकार ने बोला था आधा अधूरा, क्या लिखा? इतना इतना डिसाइडेड ऑन, छोड़ दीजिएगा। Full stop. Appellant has not even bothered to bring complete judgment and has produced incomplete judgment, which speaks on the professionalism of the concerned counsel. Next. The ratio of the law laid down in Rajesh and another versus State of Madhya Pradesh 2023 SCC online SC 1202 and State of UP versus Devman Upadhyay Supra is that before recording a statement of confessional statement of an accused, the custody can be formal, informal, or constructive, but such statements can be recorded only in custody. Full stop. Therefore, the argument raised by Shri Rajesh Avasthi in regard to the memorandum has no force in the eyes of law. Next, as far as interested witnesses signing the memorandum is concerned, Shri Rajesh Avasthi, despite our request to him to give some judgment on this issue, to point out that law, to highlight the law in regard to the nature of the witnesses who are admissible to sign the memorandum as witnesses, he could not produce any judgment. Full stop. Next paragraph. As far as 80% handicap is concerned, that has no relevance because child witnesses have clearly stated that their mother was beaten by the present appellant with kicks and fists and then a lathi. Full stop. In fact, Shri Avasthi had raised an argument that lathi was 4-inch in length. Full stop. This argument is fallacious in terms of the Caesar memo, which shows that the lathi was having four knots, knots. Full stop.
when this is taken into consideration, then a 4-inch lathi cannot have 4 knots. Thus, lathi was not a 4-inch as is suggested by Shri Avasti. हमने कहा था ना 4 इंच की लाठी. Thus, all the arguments raised by Shri, full stop. Another argument, looking to the postmortem report, Exhibit P19, and evidence of Dr. PW19, Dr. We are of the opinion that minor contradictions in the spot map, etc., will not be of any assistance to the appellant to seek suspension of sentence. Full stop. P19 Well, therefore, application fails and is dismissed. सर पेज 52 काइंडली सी पैराग्राफ 22 देखें सर, उसको भी मैं सर पेज 52 जी देख रहे हैं. P22. Full stop. अरविंद सिंह जी का जो आर्गुमेंट लिखा था ना, वहां एक लाइन जोड़ लेना. Appellant has criminal record of 24 cases as is evident from exhibit P22. नहीं हो सकता. ये तो ये जी. करना चाहते हो और ये वैसे भी किसी का ये जब्ती तो है नहीं इसकी डॉक्यूमेंट की. ये दूसरे क्या होता है कि जैसे सब्सिक्वेंट ऑफिस में सजा बढ़ जाती है, कन्विक्ट करते हैं, कन्विक्ट करने के बाद प्रीवियस कन्विक्शन में होएगी, फिर उसको अब इसके ऊपर आईओ एग्जामिन होना चाहिए. आईओ तो आईओ नहीं डाला है. छोड़े क्या कर. चलिए. हेलो.